Hi students, this is Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another chapter of English. Pile ame poduche stay hungry, stay foolish. Duita story already sorry. I hope you are a little inspired by that, speech of Steve Jobs. Let us see the third story. तृतीय स्टोरीटा हूँ तृतीय गपटा हूँ डेथ मृत्यु आम समस्त जाचे मृत्यु दिने ना दिने आमको आम पाक आसब तो मृत्यु अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स डेथ इज एन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट ज्ञानी लोक मानकर गोटे कॉन्सेप्ट हूँ डेथ तो ताकू केमती से प्रूव करिसंती आम चैप्टर स्टार्ट करबा हला ता पूर्व तुम गोटे जिन कहूँ बहुत बढ़िया बढ़िया जिन अच्छी एंड यू हैव टू वॉच टिल द एंड माने देखिबा आमे कोन इंपोर्टेंट डेथ कोन डेथ टा किपर इंस्पायर करे मन को आमे शेष पर्यंत देखिबा और जानिबा जे हाउ डेथ कैन बी एन इंटेलेक्चुअल कांसेप्ट तुम जदी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करो ओके एंड पुट योर थंब ऑन द लाइक बटन ओके लेट्स स्टार्ट सो माय थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ मोर तृतीय गपटा हूँ मृत्यु बाबद रिलेटेड टू डेथ When I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as if it was your last day, someday you'll most certainly be right. Steve Jobs is telling us, Job coach on this, मुझे तो 17 वर्ष होता मते when I was just 17 years old. I have read a quote. मोटे quote पढ़ी थे, मोटे proverb पढ़ी थे. That what is that quote? If you lived each day as if it was your last day, someday you will most certainly be right. जदि प्रत्येक दिन को तुम शेष दिन बोली तुम भाव एटा ही मोर शेष दिन निश्चित भावे दिने ना दिने तुम ठीक है जीवो निश्चित भावे दिने ना दिने तुम ठीक है जीवो काहे कि रे पिले काहे कि से प्रश्नर उत्तर आमे पाइबा एबे Okay, and it made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, it has an impression on me. अब ये लाइन रो मो जीवन ऊपर गोटे प्रभाव थिला impression कहले प्रभाव. And since last 33 years, दीर्घ 33 वर्ष हैला मु एई तथ्यटा को पाथेय करके चली छी and every day every morning I stand in front of the mirror and asked myself मु मिरर सामने रे ठिया होए प्रत्येक दिन सकाळे एवं निजु के निजे प्रश्न पचारे if today were the last day of my life जदि आजि दिनटा मो जीवन रो शेष दिन होई थांता if today were the last day of my life would I want to do what I am about to do today? Would I want to do mu karamti ki that I want to do today? mu jaha ji karibi mu seta hi karamti ki na alga kichi change karamti prashna ta kona if today were the last day of my life jodi aji dinota mor jivan ro shesho din hai thanta mu jaha karuchi seya karamti to And whenever the answer has been no for a long period of time, whenever the answer has been long, no for too many days in a row, बहुत दिनों धरी जब तक answer ता no आसे कौन हुए? I need to change something. I need to change something. मते के जे परिवर्तन करिवार अछि. Yes, because I am not on the right way. I'm not doing the right thing. That's why I have to change something. मते परिवर्तन करिवार अछि. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in life. Remembering that I'll be dead soon. आमे जदि सब बेले मने पकेइबा जे मोर मरिबार अछि. मु जल्दी मरिबा को जाउछि. Is the most important tool I have encountered to help me make the big choices in life. जीवन रे बड़ बड़ काम जदि करिवार अछि बड़ परिवर्तन जदि तमे चाहू थाओ ताहले मने रखो तमे आजि माने जल्दी मरिबा पई जाउ छ कारणटा कोन कारणटा मु कहिबी काहे कि why because almost everything because what is the reason because almost everything all external expectation कहले आशा external कहले बाह्य
बाहरिया जेति की आशा आमे जेति की परिवार आशा करि थाओ all pride जेते गर्व थाए आम मनरे all fear of embarrassment and failure embarrassment lajo shame fear कहले भय हमको डर लगे आम नॉर्मली गोटे पिला इंग्लिश जानती बट कहवा पई से मन को लाज लगे कारण के गोटे क्रिटिसाइज करता yes so don't be afraid of anybody else because you are the maker of your own destiny you will take you have the option you are the chooser of your own life you will choose now what do you want to become yes or no so don't be afraid of anybody else because almost everything all external expectation all pride all fear of embarrassment or failure these things just fall away in the face of death and all these things anger expectation pride, failure, all these things fell in front of death. मृत्यु सामने ए जिनसर किछि माने नाही तुम मरिबा को जाउछ जणे लोक तुम पछरे तरवाल धरि कि थाई आउछि तुम पैंट खोली गला तुम को लाज करिवो ना दौड़िबो तुम सेठी रही कि पैंट पिंदिबो ना दौड़िबो जस्ट थिंक निश्चित भाव हम दौड़िबा हम लाज करिबा ना तो लाजर किछि माने नाही मृत्यु पाखरे होना नाही बिले So face of death, living only what is truly important. And if you are at the verge of death, you will only think about the important things of your life. जदि तुम मृत्यु पाखे ठिया आइछ सेते बेले केवल जीवन रो इंपोर्टेंट जिंस विषय चिंता करिवो आ किछि चिंता करिवो नाही what is truly important remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. So remembering that you are gonna die तुम मरिबा को जाउछो तुम जदि मने पकाउ थाओ जे तुम मरिबा को जाउछो तुम हारिबो कि जितिबो से जिंस को चिंता करिवो नाही तुम पाखे गोटे ही ऑप्शन अछि that you have to avoid the trap of death मृत्यु को तुम केमति क्रॉस करि जिवो मृत्यु पूर्व तुम समस्या समाधान केमति हे जिवो से जगह रे एम्बैरेसमेंट फियर प्राइड यारो किछि काम नै तुम्हें लॉस हारिबार किसी डर ना यार एट द एंड मृत्यु ही जीवन शेष सीमा तो मृत्यु जदि तुम आगे अच्छी तुम्हें फेलोर को डरिबो कि ना सो तबरे कहि छी so ever the trap of thinking you have something to lose you are already naked and you are about to die that means you are already naked तुम मरिबा को जाउछो तार अर्थ कोन you are already naked तुम लंगड़ा हे सच्चो तो काहा को लाज करिवो तुम yes or no so there is no reason not to follow your heart and at the verge of death you have to follow you have to listen your heart only सेते बेले मनुष्य केवल हृदय रो कथा सुने से हृदय जहा कहे से या करे बुझियो छी नै सेति पई मनुष्य जेतबेले जस्ट एट द एंड ऑफ डेथ जहा स्टेटमेंट दिए सेटा ही फाइनल स्टेटमेंट हिता है ताहा प्रकृत सत्य हिता है about a year ago okay let's start the real story about a year ago whatever सब तोड़ कथा I was diagnosed with cancer diagnosed परीक्षा निरीक्षा करा डायग्नोस्ड माने परीक्षा करिबा भेषज परीक्षा करिबा विथ कैंसर मोर पेटर गोटे कैंसर अछि I had a scan at 7:30 in the morning मोर गोटे स्कैन हला 7:30 morning 7:30 रे and it clearly showed a tumor on my pancreas कोले कोन रथिले पित्ताशय pancreas पित्ताशय एटा से स्कैन स्पष्ट जना पड़ुतला जे मोर पित्ताशय रे गोटे कैंसर है कोन है ट्यूमर है okay tumor on my pancreas I didn't even know what a pancreas was and I had no idea mo bhare idea hi notila mo jani notili pancreas koile kon bujhela I didn't even know what a pancreas was the doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and the doctor told me it is such type of cancer that is almost incurable जे एटा इनक्यूरेबल दुरारोग्य जहा आरोग्य हे परिबो नै ठीक हे परिबो नै what did the doctor tell me that it is such type of cancer that is incurable डॉक्टर को कहले सर एक पेनक्रिस एक जो कैंसर है एटा क्योर होबो नै आपण क्योर हे परिबे नै that is incurable me too okay the doctor advised me okay and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months and doctor clearly advised me that sir you are gonna die within 3 to 6 months आपण 3 ରୁ 6 मास भीतर मर जिवे आपण बंसिबे नै के कहला the doctor का को चिप जाउस my doctor advised me to go home and get my affairs in order
and my doctor advised me to go home and get my affairs in order. ମୋ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣ 3 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ମରିବେ. Okay, which is the doctor's code for prepare to die, and this is the code of doctor. এটা ডাক্তার মানଙ୍କର কোড কোন prepare to die মରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ. Prepare to die, it means to try to tell your kids everything you thought you would have the next 10 years to tell them in just a few months. It means it is time to tell your kids your plan, your idea that you have thought to tell your kids in 10 years within 3 to 6 months. समय आसीगला तुम छुआ पिला मानकु 10 आगामी 10 वर्ष रो प्लान योजना तुम कोन कोन करिवा पय से माने कोन कोले सर्वाइव करबे से विषय कहवाटा. Thought you would have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned off. Buttoned off. Buttoned off means in order. In order. ठीक ठाक सजाड़ी की रखियो. Buttoned off, that it will be as easy as possible for your family. That you have to button up. काहेकि button up करिवो कारण एटा तुम परिवार पई मंगल हबो तुम परिवार पई सुखदायी हबो. For your family it means to say your goodbyes, and it means it's time to say goodbye. तमर जीवन रो शेष समय आसी गला तमे विदाय मागिबार समय आसी गला. Just think. I lived with the diagnosis all day, and से परीक्षा निरीक्षा से रिजल्ट को नहीं कि मुझे दिनों सारा बहुत कष्ट रे बंचिली. भोक नहीं शोष नहीं मरिवा पाई जतबेला बर्जर थिबो तुमको भोक शोष लागियो पहिले ना. Evening, and later that evening I had a biopsy. What do you do? What do you mean by biopsy? Biopsy, examination. You can say clinical test. गोटे मेडिकल टेस्ट है मोर परीक्षा करागला बायोप्सी करागला. I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, and say biopsy रे कोन कहले they stuck an endoscope down my throat. मोर गोला दे की एंडोस्कोपी मशीन ता पसई दिया गला down my throat, through my stomach मोर पेट भीतर गला, and into my intestine. Intestine कहले बृहदांत्र बुझी होछि ना जो बड़ा अंत अछि हमर बृहदांत्र. तो इंटेस्टाइन भीतर को गला. Intestine, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. Put a needle into my pancreas, मोर pancreas भीतर गोटे needle पसागला उसे needle through रे किछटा cell ओना गला बाहर. Tumor, I was sedated. Sedated means unconscious. Sedated, I was sedated means unconscious. मते अचेत करा जायतिला नर्वस इन एनेस्थेसिया दिया जायतिला. Sedated, but my wife who was there most करे थिला who was there told me that when they viewed the cells under the microscope, when the doctor viewed the cells under the microscope, जेतबे डॉक्टर माइक्रोस्कोप रे से सेल टाको देखिले, the doctor started crying. डॉक्टर को आखिरो लुह होई गला. से आनंद रे कांदी पकेले काहेकि because it turned out turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. What happened? The doctor cried with joy. आनंद रे आखिरो पानी बाहरे और पेन ले भी आखिरो पानी बाहरे. डॉक्टर कांदी पकेले जब माइक्रोस्कोप रे सेल टाको देखिले कहीं कारण से जो सेल टाको टेस्ट कला पर से जानी पारे इट वाज अ कैंसर दैट इज क्यूरेबल. सेटा आरोग्य हो पारिबो सर्जरी द्वारा. विथ सर्जरी आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ. मोर सर्जरी हला एंड आई एम फाइन नाउ. दिस वाज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ, एंड दिस वाज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ. मृत्यु को मु बहुत पाखरु देखिथिली. मृत्यु मो साइड दे के चली गला. दिस वाज द क्लोजेस्ट, and I hope it's the closest I get for a few more decades. And I thought this was the closest I got for a few decades. ଆଉ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ଶେଷ ଠିକଣା ଥିଲା. ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ତ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବି. I can now say this is to you with a bit more certainly than when death was a useful but purely intellectual concept. And that's why
That is the reason why I'm telling you that death is what a useful but purely intellectual concept, intellectual, knowledgeable, intellectual, wise, intellectual, voice. It's a wise concept. ज्ञानी माने मृत्यु को भलो हिसाब रे नियंती गोटे intellectual concept हिसाब रे नियंती. It's a tool that you can encounter any problem, any challenges in life. Oh, okay, when death was a useful but purely intellectual concept, no one wants to die. किए मरिबा पई चाहन त मरिबा को चाहो ना मो मरिबा चाहना. Nobody wants to die. Okay, nobody wants to. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. नहीं मले एका स्वर्ग देखि परिबा किंतु जो माने स्वर्ग को जीवा पई चाहंती से माने मध्य जल्दी मरिबा पई चाहंती नाही. Yes or no? Nobody wants to die. Even the people who want to go to heaven, they don't want to die, son. And yet death is the destination we will share. आमे समस्त जानी छ destination को ले ठिकाना. Death is the destination we all share. जे माने सेटा हो जीवन रो शेष ठिकाना मृत्यु ही शेष ठिकाना आमे समस्त सेठी जीवा हो ना नहीं शेष ठिकाना we share. No one has ever escaped खसी जीवा escaped. No one has ever escaped it. किए भी मृत्यु रो कब्जा रु खसी जाई नहीं. No one has ever escaped it. And that is as it should be. And that is as it should be. सेटा जेमती अछि सेमती अछि अब जेमती अछि सेमती ही रहिबा उचित. Because death is very likely the single best invention of life. And death is very likely the single best invention of life. Invention कहले कोन पिले उद्भावन जीवन सबुठार मूल्यवान आ भल उद्भावन होची मृत्यु. से गोटे ही भल जिनस अछि जीवन रे आ सेटा को समस्त को एक्सेप्ट. एवरीबॉडी विल डाई वन डे. यस और नो? तुम भी मरिबो मु मरिबी. एवरीबॉडी विल डाई वन डे. चेंज एजेंट एंड इट इज लाइफ चेंज एजेंट. यह जीवन को परिवर्तन करिवार माध्यम. डेथ इज द लाइफ चेंजिंग इवेंट. Chemity, let us see how it clears out the old to make way for the new, because it is an intellectual concept. It is life-changing event. Why? Because it clears away the old one to make the route for the new. कारण पुराणाटा सफा हेले नुआ जिनस आसीबो. बुढ़ा माने मले पिला माने आसीबे. बुढ़ा माने ओल्ड जनरेशन गले नुआ जनरेशन आसीबो. So that's why life-changing event. Death is the life-changing event. To clear for the new. Right now, the new is you. Yes. And right now, you, the students, you, the young people, you are the new generation. You are the new generation. But someday, not too long from now. Okay? It's you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old. आउ एमती भी माने आउ बेसी दिन नाही आउ 20 वर्ष पर तमे भी बुढ़ा आइ जीवो आउ गोटे जेनरेशन आसीबो. So you have to accept it. Gradually become the old and be cleared away. किसी दिन पर तमे भी सफाई जो हमें स्वभाव तपर तमे भी सफाबो हो ना नहीं पिले. So sorry to be so dramatic but it's quite true. Sorry to be so dramatic माने मोरिगे अलगा वे को पळेली but this is true. Yes or no? Steve Jobs कहउछन sorry to be so dramatic. I'm serious but it's true. Your time is limited. You have a limited time. You have a limited. Art is long time is splitting. Art is long time is splitting. We have to do lots of work. We have a limited time. So your time is limited. समस्त पाखरे गोटे limited समय अछि. Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. तेणु अन्यर धारणा उपरे वंचिकी निजर जीवनटा को नष्ट कर नाही. अन्य को देखि कि कॉपी कर नाही. निजर स्वतंत्र रास्ता तैयारी कर. Make your own special way. May live in your own speciality. Live with your own choices, own ways. Don't follow others. Make somebody follow you. निजर स्वतंत्रता बजाय रखो. निजको स्वतंत्र करिकि तोड़ो. होना रे निपिले. Else life, don't be trapped by dogma. Dogma कहले कोन रपिले? Dogma. अंधविश्वास, superstition, अंधविश्वास.
अन्य मानकर मतामत को नहीं कि तुम बंच ना किए कौन कहूँ ताको ध्यान दियो नहीं यू आर ए ह्यूमन बीइंग यू कैन मेक योर ओन डिसीजन जस्ट डिसाइड योर ओन वे डगमा व्हिच इज लिविंग विथ द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल थिंकिंग डगमा मीन्स व्हाट लिविंग विथ द अदर थॉट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग अन्य मानकर जीवन माने देखिकी अन्य मान को देखिकी बंचवाटा छाड़ो अन्य मान कथारे पड़वाटा छाड़ो डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस and don't let others opinion drown out your own inner voice अलगा लोकर कथारे निज इच्छा को दबिबा को दियो नाही अलगा लोकर कथारे तमे चालो नाही निजस्व रास्ता तैयारी करो निजर कैरियर निजे तैयारी करो कहार कथारे पड़ो नाही से कहला अरे बाबी आ पछे लिखियो चाल खेलिबा ना यू हैव टू डिसाइड ना हो कि नहीं सो डोंट फॉलो अदर्स Okay, and most important, have the courage to follow your heart and intuition. What is the most important thing? What is the most important thing? Like, you know what? Follow your heart, follow your intuition. तुम्हार आत्मा र कथा सुनो अंतरात्मा र कथा सुनो इंट्यूशन र कथा सुनो निजर अंतरात्मा र कथा सुनो इंट्यूशन कहले कोन अंतरात्मा वी हैव आवर इनर वॉइस आम भीतर विवेक अछि कॉन्शियस अछि विवेक अछि ना नहीं आम जेतबे खराब काम करबा को जाओ हमर मन भीतर किए जने मना करे नहीं रे एटा खराब किंतु आम ताको क्रॉस करके जाओ सो यू हैव टू फॉलो इट सी जे कहूची जे बाबू ए काम करो नहीं वी हैव टू फॉलो दैट यस और नो So, and most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become, and your heart know, your intuition know. तुम्हारा अंतरात्मा जाने, तुम्हारा आत्मा जाने, तुम्हें actually कौन चाहूँचो. तेणु से सब बेले तुमको रियल रास्ता देखेबो ना कि मुंह देखिबे ना को अन्य मान देखेबे. So listen to your heart, listen to your intuition. Become everything else is secondary. Everything else is secondary. So सेकेंडरी कहले से माने साइड लोक कहा को सुनिबार अछि हमको वी हैव टू लिसन टू आवर हार्ट वी हैव टू फॉलो आवर हार्ट वी हैव टू फॉलो आवर इंट्यूशन आमे निजु को निजे जानिबा वी हैव टू नो आवरसेल्फ तुम जानि छ एजुकेशन माने काना टू नो व्हाट यू डू व्हाट यू नो दिस इज द बेस्ट ऑफ एजुकेशन टू नो व्हाट यू डू व्हाट यू नो दिस इज द बेस्ट फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन जहा जानि छ ताहा करो जहा करू छ ताहा जानो दिस इज ऑल ओके व्हेन आई वाज यंग let us see when I was young मुझे तो युवक थे स्टीव जॉब्स कहउचंती there was an amazing publication called the whole earth catalog there was an amazing publication गोटे publication हाउस थिला गोटे बही पब्लिश होतला जहार ना थिला the whole earth catalog कोन थिला the whole earth catalog okay the whole earth catalog okay which was one of the bible of my generation I'll see some more generation more जो समस्त माइक थले that was considered as the bible ताको बाइबल हिसाब रे परिगण बहुत मूल्यवान बहुत माने it was the library of knowledge lots of knowledge were there yes or no so generation it was created by a fellow named Stuart Brand and created by Stuart Brand who has created that whole earth catalog Stuart Brand not far from here in Menlo Park और Stuart Brand को तैयारी करते सेटा whole earth catalog टा Menlo Park and he brought it to life with his poetic thoughts and it was written in the poetic form कवित्व तांगर poem हिसाब रे कविता हिसाब रे लिखाइतिला poetic thoughts this was in the late 1960 and it when 1960 the whole earth catalog which year 1960 1960 मसिया लेखा बुझे पिले 1960 before personal computers and desktop publishing and जेतबेले एटा आउथला सेतबेले कंप्यूटर नथिला पर्सनल कंप्यूटर थिला ना नथिला गूगल भी नथिला कि डेस्कटॉप नथिला लैपटॉप नथिला मोबाइल नथिला बुझिले ना so it was all made with typewriters कोथरे लेखा होतला टाइप करा होतला typewriters रे good okay scissors कोइची पेपर रे कोइची यूज होतला and polaroid black and white camera रे सेतबेले सेटा शूट करा होतला polaroid cameras it was sort of like Google in paperback form and that whole earth catalog was just like Google in paperback form paper form रे Google थिला बळिया सेटा थिला 35 years before
35 वर्ष आगु जॉर्ज गूगल क्या 35 वर्ष पर तार 35 वर्ष पर गूगल आसला 1995-96 गूगल आसला गूगल क्या इट वाज आइडियलिस्टिक आदर्शवादी. One of the exemplary thing was there, idealistic and overflowing with neat tools and great notion. Neat tools and great nation. Tools and nation. Notion means view. Tools means, you know, here you can see the knowledge. So it was a combination of tools and notion. Loko samastamra view record kara aithila. Loko manଙ୍କର knowledge share ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଠି ଲିପିବଦ୍ଧ କରା ଯାଇଥିଲା. Great notions. Stewart and his team put out several issues of the whole earth catalog. से माने बहुत गुड़ा इशू पब्लिश करते the whole earth catalog. Stewart and his team, and then when it had run its course at the end, run its course means जेतबेले सरी गला शेषरे they put out a final issue. Put out means publish. Put out means put out, here means publish. Okay, put out a final issue. कौन कले गोटे फाइनल इश्यू शेष इश्यूटा तैयारी कले प्रॉब्ली यो फाइनल इश्यू इट वाज द मिड 1970 से 1965 तैयारी हला और 1970 मसे सरीवा बसतला 1970 आई वाज यो एज मते भी 15-16 वर्ष मु तुम मान कर बोलिया थली के गोज स्टीव जॉब्स का स्टूडेंट मान को आई वाज अ फ्यू यो एज ऑन द बैक कवर ऑफ देयर फाइनल इश्यू. तांगर जो फाइनल इश्यू रो लास्ट बैक कवर रे कोन थिला पिले वाज ए फोटोग्राफ. देयर वाज ए फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड. गोटे गाँ गहलिया रास्ता सका गाँ गहली रो सकाळ समय रो रास्ता रो दृश्य थिला. सकाळ समय रो रास्ता रो दृश्य थिला कंट्री रोड. द काइंड यू माइट फाइंड योरसेल्फ हिचिंग ऑन इफ यू वर सो एडवेंचरस दुस्साहसी. एडवेंचरस कहले दुस्साहसी एडवेंचरस कहले कौन बोले दुस्साहसी. तुम जदि अति दुस्साहसी माने अति दुस्साहसी तुम जो काम करबा पछाओ नाही तुम भी सेठी माने हिचिकिंग. तुम भी हिचिकिंग कहले कौन माने तुम भी माने भाबिबो थरे जे मुझे भी कि नाही एमती रास्ता एमती खतरनाक गोटे रास्ता रो तैयारी हेतिला जे तुमको भी डर लागिबो हिचिकिंग. यू विल आल्सो हिचिकिंग. On if you were so adventurous, beneath it were the words. तार तले it were the words of लेखा है तिला. कौन लेखा है तिला पिले? Yes, you are correct. कौन? Stay hungry, stay foolish. कौन लेखा है तिला? Stay hungry, stay foolish. वर्तमान आने जानी बात stay hungry, stay foolish कहले कौन बहुत जो पिले? What do you mean by stay hungry, stay foolish? Yes, stay hungry means you know don't be satisfied. Whatever you have got, जेतिकी पाइचो सेतिरे शांति हो नाही. बुझियला? Stay hungry means don't be satisfied what you have got. Don't be contented what you have got. Stay foolish. Never think that you learn everything. केबे भाबो नाही जे तमे कोन सबु बेले तमे सबु जानि देइछो. जेतेबेले when a man think that he had come to know everything is finished. ता जीवन शेष हो गला. जीवन और किछि नाही. Yes or no? So stay hungry, stay foolish. सबु बेले माने अतृप्त रुह आउरी no I have not got I have not reached the limit. I have to get more, I have to learn more. So this thinking should be there with us. Foolish, it was their farewell message as they signed up, and this was the farewell message of Stewart Brand and his team. स्टीवर्ट ब्रांड से टीम रो सेटा फेयरवेल मैसेज थिला शेष मैसेज थिला खबर थिला दुनिया को जे प्ले स्टे हंग्री कोन जेते पाइले भी शांति हो नाही आहुरी आगु को माडी चलो जेते पढिले भी केबे तृप्त हो नाही सरी गला मोर पाठ मु सब जानी गली ना एवरीबॉडी इज ए लर्नर. वी आर लर्निंग एवरी डे, सो वी हैव टू लर्न. Stay foolish, and I have always wished that for myself, and I have always wished that for Steve Jobs is telling here. मु सबले एया ही मो पाई चिंता करे, मु सबले भाबे
कौन जे मु किसी भी करी नाही किसी भी पाई नाही मते अनेक आगो को जीवार अछि अनेक पाइबार अछि मु जेते पढिले मते केबे शांति लगे नाही मु भाबे आहुरी पढिबी कारण पढिबार अंत नाही पढिबार सीमा नाही so as you graduate to begin anew जेमिति तमे आरंभ करूछ वर्तमान तमे ग्रेजुएशन रो फर्स्ट लेवल रे अछ ओके आई विश दैट फॉर यू मु तमन को पई विषय आशा करूची stay hungry stay foolish thank you I hope you enjoyed. I have tried to make you understand. If you have any doubt, any confusion, just drop a comment for me. Bye bye. Thank you.